we'll be continuing in our video series, and today we'll be covering fifth video of the series, in which we will we will see. First of all, we'll see what we have covered till now. This is CPR video series number 5. So, what we have covered till date. First of all, we have covered CPR, that is central pivot range. सो CPR क्या होता है? बेसिकली ये 3 लाइंस होती हैं किसी भी चार्ट के ऊपर, और ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं. सो इसका मतलब हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इस बीच वाली का मतलब डिवाइडेड बाय 3. तो बेसिकली कल के दिन की ओपनिंग के पहले ये लाइन पहले से चार्ट पे देखी जा सकती है कि ये वाली प्राइस कौन सी प्राइस है, क्योंकि हाई पता है पिछले दिन का, लो पता है और क्लोज पता है. डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो यू कैन नो अबाउट दिस लाइन, ये लाइन कहाँ है. पहले जब कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे तो ये प्रोसेस एक्सेल शीट्स में की जाती थी, बट नाउ वी हैव क्लासिकल कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स also, fast NVIDIA chip and whatever GPU and so we can do it. And manually if I were to show you कैसे देखते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ. चार्ट में देखो, this is weekly CPR. See, wait, I'll turn off this indicator. So this thing is weekly CPR. See, it develops throughout, and this line is fixed for whole week. Abhi, this is the second day of the week, and you can see it was in the sell bias, opened below CPR, this mean price, and it was a sell bias, and it crashed and took a support at S2. This is weekly support S2, and is हाँ. So मैं क्या बता रहा था, we can change it, we can change the time frame. See, today the market opening is in the bullish bias. See, yesterday the bias turned, the means were shifting downwards, मतलब CPR नीचे आ रहे थे. ये ये जो CPR पॉइंट्स हैं ये नीचे आ रहे थे, बट ओपनिंग ऊपर हो गई, तो मीन के ऊपर ओपनिंग मीन्स बुलिश बायस. ये हम अभी बात कर चुके हैं, हाउ टू सेट द बायस. ओके, सो वेट, let me turn on the camera once. Okay, I think we need more lights, guys. Wait, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस. So yeah, so basically in second video we have seen how to check the bias uh, of every time frame, every time frame, how to see the bias, and what is CPR already covered, how to check the bias in different time frames can have different biases. Think about it, it's not that technical. मतलब बहुत सिंपल है कि वीकली बायस बुलिश हो सकता है अगर टिक ऊपर चल रहा है, इफ दिस इज CPR ऑफ द वीक, और इसके अंदर डेली CPR भी बन सकते हैं ऐसे, और प्राइस नीचे ओपन हो सकता है डेली CPR के, एंड इट कुड बी अ सेल बायस. तो हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट बायस बन सकते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड. And in third video, what we did covered, we covered, that was the fourth, and yes, bias rejection, no, 2 day relation, 2 day 2 day relation of CPR. That's what we have covered in the third video. And in the last fourth video
we did cover the nature of players. So basically there are two kind of players. One is responsive and other one is initiative. So basically मार्केट में कोई थर्ड सिनेरियो नहीं है. देयर इज नो थर्ड केस. ओनली टू, दो तरीके के लोग ही ट्रेड करते हैं. वन इज रिस्पॉन्सिव एंड अनदर वन इज इनिशिएटिव. रिस्पॉन्सिव कब ट्रेड करता है? जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं और बायस के अगेंस्ट, मतलब we'll discuss it with the drawing of some sort. So basically responsive player वो होते हैं जो प्राइस को मीन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, टू एवरेज, एवरेज करने की कोशिश करते हैं प्राइस को. वेट, यहीं से ही स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली दिस इज ऑल सिंपल. तीनों टैग लाइन को गूगल भी कर सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं ही सबसे अच्छा बता रहा हूँ, कोई और अच्छे से बता सकता है. सो बेसिकली व्हाट यू शुड बी नोइंग बिफोर diving into the quantitative development part of the video, मतलब to quantize your strategy and how to formulate your market scenarios. So basically what we have learned, there are some players, responsive player and initiative. So basically initiative player, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि they initiate the move, they they initiate the main move. Main move means the bias. They they play with the bias. It could be any bias. I'm not saying कि वो डेली बायस में प्ले करते हैं, वो वीकली बायस में प्ले करते हैं, या फिर वो मंथली बायस या 15 मिनट बायस, वट एवर. सो अभी इतना डिटेल में मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट हाँ, सो बेसिकली दे प्ले विद द बायस. अगर बुलिश बायस है तो मीन के ऊपर है, तो जो ऊपर बाइंग आ रही है, दैट इज इनिशिएटिव बाइंग. सो इनिशिएटिव प्लेयर्स कहाँ पे एंटर करेंगे? बेसिकली जहाँ से मूव स्टार्ट होना होगा. या तो मूव कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बेसिकली एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे थोड़ी सी देर में, बट हाँ पहले रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स की और बात कर लेते हैं. रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स बेसिकली बाइंग के दिन में सेलिंग करते हैं. मतलब जिस जिस दिन बुलिश बायस होता है और प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है, अचानक से हाई गया और फिर जो रिवर्स कैंडल बनती है, दैट इज रिस्पॉन्सिव प्लेयर. सो बेसिकली दे, let me ask ChatGPT how it explains it. Wait, I can take AI's help, right? Wait, let me ask. There has to be some easy way out to, because this is the most complicated part, guys. Other than this, there is no other complexity in the market. Once you are very clear that whether you are going to be a responsive participant or initiative participant, so basically it decides, you have to decide it before, like how you'll be doing it. So basically let me ask ChatGPT to make it. Okay, hello ChatGPT. So I'm streaming live on YouTube, and I just want to explain my viewers in a very easy way that how responsive players play in the market and how initiative players play in the market. So I'm doing the CPR video series in which I'm explaining everything out there in this book called Secrets of Pivot Boss. So basically,
मुझे हिंदी में आई वांट अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर रिस्पॉन्सिव प्लेयर एंड इनिशिएटिव प्लेयर. सो व्हाट I have covered till now, I have covered the bias and I have covered 2 period relation of CPR, and also I have covered uh, what exactly CPR is, and also 4 types of participants we are doing in this video. So basically I need some simple definitions to not confuse the audience basically. Let's go. Someone was watching and then he fucking left. So basically मैं चार्ट भी दिखाना शुरू कर देता हूँ. So basically आज गोल्ड का it's a bull bias. If you see, it's already in the bullish bias today, and as you can see this CPR shifting upwards. देखो दिन शुरू होते ही you can see the CPR, and these 3 lines is the fixed lines. So basically आज के दिन का top buying price ये है, ये वाला प्राइस उधर ऑलरेडी लॉक कर रखा है. So this is the dip buying. So this is the dip buying, and see opened above CPR, that is like bullish bias already and going upward. That means who is buying? This is initiative players are buying, initiative buyer, because they are initiating the same move which is in the bias. अगर यहाँ से if it faces the rejection till this price, there will be responsive selling. So basically एक दिन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिव सेलिंग भी होती है, इनिशिएटिव बाइंग भी होती है, और अगेन अगर ट्रेंड उल्टा उल्टा है तो इनिशिएटिव सेलिंग भी होती है और रिस्पॉन्सिव बाइंग भी होती है. सो आई थिंक ये तो मैंने समझा दिया है, और जीपीटी से और देख लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन एनी डे व्हेन the movement in the price is same as the bias. I mean, इसको लिख दूं क्या मैं? No, I should not write because it's not a fixed thing. But हाँ, when average is pivot price basically. So when the move or it's same move when same move with respect to bias of the period or daily time frame, you can see, that is called initiative. It could be buying or it could be selling, depends on what is the bias of the day. And same when move when price is not moving, price is not moving with respect to bias or going towards mean price. So that is responsive players. Simple. So अपर सीपीआर के पास सेल, नो ये नहीं सीखना मुझे. मार्केट रेंज में है, यहाँ से रिवर्सल आएगा. माइंडसेट, तो मार्केट पुश करते हैं तो ट्रेंड, भाई व्हाट इज, भाई जीपीटी तो और ही गंदे तरीके से समझा रहा है. इवन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. अगर सीपीआर के अंदर रेंज है तो नो गाइज, आई थिंक आई हैव डन द जस्टिस. आई मीन मैंने ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है. अदर देन जेट
GPT, that is more confusing. So basically there are two types of things which can happen. One is responsive, whether it could be buying, selling. Second is initiative, whether it could be buying and selling. Okay, so that is the simplest thing which we have covered right now. And so ये वाला वीडियो भी ऐसे ही रखते हैं ना, इन द सिक्स्थ वीडियो, अभी नेक्स्ट वीडियो भी बना ही लेते हैं अभी, वीडियो नंबर 6, we'll be learning about supports, resistance, all math. So it's all math based data points. When data makes sense and when data does not make sense, that is also very important thing to understand. So in the next video I'll be covering uh, what are resistance and what is support, and how you can see the where prices with with respect to different time frames. Like if the price is below S1 in daily time frame, that means what? If the price is above R1 in weekly time frame, that means what? So we'll be covering these things in the next video. So stay tuned and subscribe for more videos like this. This is very detailed information and very cut to information which I'm trying to provide on this YouTube channel. So uh, I hope you guys will enjoy the content which I'll be putting more efforts in the video, I believe, from now. So that's it for the video, and stay tuned and subscribe once more.